This is a new topic. We have discussed replication, how virus replicate is nucleic acid. Now, like towards more complicated topics like barriers to infection, how host pose barriers towards the infection, and how these viruses they overcome those barriers. So barriers to infection and is it evasion or modulation? So these two terms normally are used. People do use these two terms, evasion and modulation. So evasion is to evade is to elude by dexterity or stratagem. Stratagem is actually a deceitful strategy, means someone is deceiving and someone is deceiving. So that's a deceiving strategy. And dexterity is skill in performing tasks. And to elude is to escape from. And evade is actually to elude by dexterity or stratagem. Means it needs to escape from through a strategy, through a deceitful strategy, or through some skills. So either we need to use the word evade, or we need to use the word modulate for the virus, like virus infection. What term could we use in terms of immunity and the immune system? So modulate is to adjust to or keep in proper measure or proportion. So a modulate is to adjust to or keep in proper measure or proportion. So what term is best to choose in them for virus infections? So the term evasion implies that host defenses are ineffective. So if we use evasion, that will means the host defenses are ineffective, and that's not the case actually. In reality, a virus does not necessarily need to be invisible to the host response throughout its life cycle. The host do recognize their viruses. It simply needs to delay or defer detection of for a time sufficient to reproduce. So what does that mean? That means host has a stringent immune system, but what occurs actually is actually the delay in the response time actually. And perhaps a more accurate term to describe viral gene products that delay or frustrate host defenses is the immune modulators. So immune modulators could be the preferred term to be used as these. This is the most accurate term. And viral gene products actually, what they do, they delay or they frustrate host defenses. So they modulate, actually the viruses actually modulate immune responses. And the principle here is that given the speed of the viral reproduction, an infection can be successful even if host defenses are only suppressed transiently. So if host defenses are suppressed, even if they are suppressed transiently, the viral reproduction it has more speed, and they reproduce with a fast pace. सर इसका मतलब क्या है? किसका? इस पॉइंट का इसका ये मतलब है कि वायरस रिप्रोडक्शन जो है वो तेज होती है होस्ट के उससे मल्टीप्लिकेशन से। होस्ट जो जितने प्रोटीन्स बना रहा है और उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक वायरस को रिकॉग्निशन से पहले वो इतना मल्टीप्लाई कर रहा होता है कि वो थोड़ी देर बाद उसको रिकॉग्नाइज करता है। होस्ट जो है फर्स्ट लाइन में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। सिंपल इज दैट। ओके सर, थैंक यू। Okay, so who will explain? जी, रिदा। सर जरा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया करें। यस सर, थोड़ा सा इजी करके। इस टाइम थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, हमें समझ नहीं आती सेंटेंस। अच्छा चलें, कोई एक्सप्लेन कर दें तो फिर उसके साथ ही देखते हैं। यस सर।
जी, जितनी समझ आई है वो बताएं। सर आपने बोला कि जो प्रोटीन जो होती है वो जब रिकग्नाइज करती जाती है और जितना फास्ट मतलब प्रोटीन मेकिंग होती है उतनी फास्ट रिप्रोडक्शन होती है। अभी जो पॉइंट आपने समझाया मुझे ये समझ आई है। अच्छा, और बाकी जो बाकी चीजें हैं जो इससे पहले डिस्कस हुई हैं। मायदा इज देयर, मायदा। मायदा मलिक। जुनेरा, जुनेरा। जी, यू हैव प्रॉब्लम, ओके। अदीबा। जी अदीबा। जी बताएं, हमने क्या इस स्लाइड पे पढ़ा है। होता है कि इल्यूट करना या अपनी स्किल और परफॉर्मेंस, मतलब सर इनकी टर्म की स्पेसिफिक समझ नहीं आई। और मॉड्यूलेशन होता है कि एक प्रॉपर मेजरमेंट को एडजस्ट करना और उसके मुताबिक काम करना। और आपने बताया कि जो सर इतना समझाना नहीं आ रहा। अच्छा चलें, पूरी क्लास ये समझ लें, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अच्छा चलें, सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि दो टर्म्स नॉर्मली यूज होते हैं, एक को कहते हैं एवेजन और दूसरे को कहते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो क्या हम एवेड वर्ड यूज करेंगे या मॉड्यूलेट यूज करेंगे फॉर वायरस इन्फेक्शन, क्या हम यूज करेंगे। सो फॉर एवेजन वर्ड जब यूज किया जाता है तो इसका ये मतलब हुआ कि जब वायरस एवेड करता है होस्ट सिस्टम को, तो इसका मतलब ये हुआ कि होस्ट सिस्टम जो है वो इनफेक्टिव है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो इनफेक्टिव है, ठीक है। वो वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और वो या वायरस उसको धोखा दे देता है, लाइक द होस्ट सिस्टम इज इनफेक्टिव। सो लेकिन हकीकत में होस्ट सिस्टम जो है वो इफेक्टिव होता है, दैट इज लेकिन उसके रीजन ये है कि उसने बहुत सारे डिफरेंट पैथोजेंस को और डिफरेंट मैकेनिज्म्स को परस्यू करना होता है, इसलिए। जी सर, आवाज कम हो गई है। अभी भी कम है आवाज। अब ठीक है। अच्छा, सो इसका ये मतलब हुआ कि वायरस सॉरी होस्ट जो है, होस्ट इम्यून सिस्टम जो है दैट इज स्ट्रिंजेंट, दैट इज वर्किंग, बट ओनली प्रॉब्लम इज वायरस ने क्या करना है, एफिशिएंटली मल्टीप्लाई करना है और स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। इसकी जो स्पीड है रिप्रोडक्शन की वो फास्ट होती है और होस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो डिले होता है, ठीक है। सो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि होस्ट इम्यून सिस्टम इनफेक्टिव है, ठीक है। बाद में वो थोड़े देर बाद वो उसको रिकॉग्नाइज कर जाता है, ठीक है। अगर हम एवेजन का वर्ड यूज करेंगे, एवेजन का मतलब फिर ये हुआ कि इस वायरस को अपने पूरी लाइफ में होस्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इस तरह सिचुएशन नहीं होती, बाद में ये रिकॉग्नाइज कर हो जाता है और लाइक कंट्रोल भी हो जाता है। अच्छा, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मॉड्यूलेट वर्ड यूज करना है, एवेड वर्ड यूज नहीं करना, इम्यून एवेजन वर्ड यूज नहीं करना, इम्यून मॉड्यूलेशन वर्ड यूज करना है, सिंपल इज दैट। समझ आ गई कि नहीं। सर यस सर, आ गई सर। इवेजन की समझ आ गई। आ गई है, सही है, यस सर। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट इज, अगर आप इस डायग्राम को देखें, सो इस डायग्राम में ये इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी के बारे में है कि इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी हाउ इट प्रोसीड्स, वेट फॉर अ व्हाइल, लाइक ओके, सो हाउ इट वर्क्स,
And first of all, this is an example from ectromelia virus infection of mice. And initially, it infects the skin. And skin invasion occur. Means, and this is INVASION, skin invasion occurs, and the virus reproduces there. Once it multiplies there, it goes into the regional lymph nodes for reproduction. After the lymph nodes, it comes into the bloodstream, and that will be primary viremia. Means the primary viruses and the okay, so it will come into the bloodstream, and this will be known as primary viremia. And after that, the primary viremia will invade spleen and liver and will reproduce. Necrosis could occur there, and the virus from there, they will reproduce and will come into the bloodstream again. Now this is known as secondary viremia, because the primary viruses, they replicate, they multiply there, and they come into the bloodstream again, and that will be the secondary viremia. The secondary viremia, after that, it will again infect the skin. Focal infection will occur, and that will reproduce there. And after that, so this was the incubation period from day 0 to day 7 for this ectromelia virus. This will be the incubation period. Mean the 7 days will be the incubation period for this virus, and this will be in the mice. So in the incubation period, what will occur? Initially, skin will be invaded. After that, replication in the regional lymph nodes, then the primary viremia, then the spleen, liver organs, these type of organs, the infection of those, and then the secondary viremia, and then again the skin, and that's it. And that's the and that will reproduce, and that will infect other mammals as well. So after incubation, the disease, how the symptoms will be appeared on the organism. Like for the symptoms, initially swelling of foot, because it infect the foot first, and swelling of foot, and that will be primary lesion. After that, and that will be within 8 days, the swelling of foot will occur. And after that, early rashes, papules, and they will occur on the skin, and later on severe rash, and that's give rise to ulceration, and that even leading to the death of the animal. So this will now the initial was the incubation period, and now is the disease, and how the disease progress. And initially on the back end, the virus, how it's replicate there, and after that how symptoms looks like. So infection begins through a break in the skin. So the skin needs to be broken down so there needs to be cracks in there, and allowing the local viral reproduction and dissemination via lymphatics. Within 1 to 2 years of 1 to 2 days of exposure, primary viremia occurs when the virus is released into the bloodstream and permitting the infection to the spleen and liver and other organs. And secondary viremia due to the release of virus from the organs, resulting into the infection in distal sides of the skin. Like infection occurs in the foot, and now in the other organs like tail and other skin regions. And the foot at the side, and foot is actually the site of the primary infection. So that swells due to the inflammatory response. So inflammatory response due to that, and the swelling will occur in certain strains and wild mice. A severe rash may develop, and that give rise to ulceration actually. And that's it. Who will explain? मैं कर दूं सर इसमें? जी please. जी सर, ये ओवरव्यू यानी कि ओवरव्यू दिया उसने हमारे माइस के इम्यूनिटी सिस्टम का। सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर जो होता है हमारा स्किन, उसको जब भी कोई भी इंफेक्शन आती है, लाइक
वायरस या कुछ भी इन्फेक्ट करता है तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर से पास होता है, तो वो हमारी स्किन है। तो जब वो स्किन से पास होगा वहां से रिप्रोडक्शन होगी, उसके बाद सेकंड आता है सेकंड लाइन ऑफ बैरियर जो हमारा होता है लिम्फ नोड रिप्रोडक्शन। वहां पर क्या कहते हैं हमारे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, उसके अलावा हमारे टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिव होंगे, वो उनकी रिप्रोडक्शन होगी। और फिर उसके बाद जब ब्लड स्ट्रीम यानी उनसे भी पास आउट हो जाएगा वायरस, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम प्राइमरी वायरीमिया होगा। फिर उसके बाद जब वो इन्फेक्शन सेल के अंदर चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गन होंगे, लाइक माइस के जो ऑर्गन होंगे वो इन्फेक्ट होंगे। वो स्प्लीन एंड लीवर हैं, जो वहां पर नेक्रोसिस होगी, सेल्स की डेथ होगी, जो वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा, जो हेल्दी सेल्स होंगे उनकी डेथ करना शुरू कर देगा जो ऑर्गन्स के होंगे। फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से फिर सेकेंडरी वायरीमिया होगा, फिर स्किल एंड फोकल इन्फेक्शन रिप्रोडक्शन होगा। ये ओवरऑल जो इंक्यूबेशन टाइम है, इंक्यूबेशन टाइम एक्चुअली वो होता है जो टोटल 1 से लेके 7 दिन में, जो उसने अपने 7 दिन के बाद यानी कि अपना पूरे का पूरा उसने इन्फेक्शन की करके सिम्टम्स शो हुए। जब सिम्टम्स शो होंगे फिर स्वेलिंग ऑफ फुट, प्राइमरी लीजन्स होंगे, यानी कि वो फिर उसके सिम्टम्स शो होना शुरू होंगे और हमारा क्या कहते हैं कि वो पता लग जाएगा कि मतलब इन्फेक्शन हो गई है। फिर उसके बाद अर्ली रैशेज होंगे, फिर उसके बाद सीवियर रैशेज होंगे जिसको अल्सरेशंस कहेंगे। ये फिर ये वाला टाइम जो है 7 to 11 डेज होगा, ये डिजीज का होगा। फर्स्ट डे जो सिम्टम्स के होंगे 1 to 7 डेज, और आगे 7 to 11 डेज जो होंगे वो उसके डिजीज के होंगे। That's it. ठीक हो गया। मरवा, सर ये फोकल इन्फेक्शन क्या होता है? फोकल इन्फेक्शन। जी सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। हेलो, ये आपको सिर्फ कम आ रही है, सबको आ रही है कम? सर हमें भी कम आ रही है। ये सर आवाज कम आ रही है। पिछले क्लास में भी यही इशू था। सर आवाज बिल्कुल डिस्टॉर्टेड आ रही है, जरा भी समझ नहीं आ रही। सर बिल्कुल थोड़ी सी बहुत पीछे से आ रही है, जैसे सही समझ नहीं आ रही। ये पिछले क्लास में भी, आज पता नहीं क्या इशू है, पिछले क्लास में भी यही इशू था। ओके, अभी ठीक है आवाज? जी सर अब ठीक है। ओके, सो फोकल इन्फेक्शन जो है वो लोकलाइज इन्फेक्शन होती है। मीन्स के एक सिर्फ स्किन पे इन्फेक्शन हो और बाकी जो है वो बाकी जगहों पे वो नजर ना आए ना, ठीक है, बाकी जगहों पे इन्फेक्शन ना हो। लाइक जिस तरह सर एलर्जी होती है हमें कोई इंस्ट्रूमेंट के प्रोडक्शन से, वो क्या कहते हैं। और सर ये वायरेमिया का मतलब क्या होता है? दिस इज ए कलेक्शन ऑफ वायरसेस, जो वायरस पार्टिकल्स हैं एक्चुअली, ठीक है। रब्बानी आपको आवाज आ रही है मेरी? रब्बानी, गुलाम रब्बानी। हेलो सर। जी जी, आपको आवाज आ रही है? सर आवाज बिल्कुल जो है डिस्टॉर्टेड है, जरा भी समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा, क्लास आपको आवाज आ रही है? मोइस आपको आ रही है आवाज? यस सर, क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? यस सर आ रही फिर रब्बानी, फिर आपके साथ कुछ मसला होगा आपके नेट के साथ ना, यहाँ भी है, मुझे ये अंदाजा है, क्योंकि आज पिछली क्लास में भी जो है या तो मेरे सिस्टम में कोई इशू है तो आवाज सही नहीं जा रही थी, लेकिन आप रब्बानी आप देख लें, शायद आपके एंड पे भी कोई इशू है, इस वजह से भी आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी। सर आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। चलें चलें, ठीक है। So moving further, so this is the explanation of the diagram we have covered is acromegalia. This virus is shed in the feces of its natural mouse host and gains access to naive host via small aberrations in the foot pads. So if there are small aberrations in the foot pads, the virus will enter there from the feces into the foot pads, and that will infect them, the new mice. So first hurdle to be overcome is penetration of dead skin of the foot pad. So when the virus enter into the foot pad cells are dead. So it is impossible for a virus to multiply in a dead cell, which serves as inhospitable
barrier against the infection. So this is the first barrier to the infection. The virus couldn't replicate in a dead cell because for replication it needs a living dividing cells actually. And virus, because it will need to multiply, it will replicate itself. For replication it needs to activate the replication machinery of the host, and once the activation machinery is activated, that means the cell is in the replicating state, so it will replicate the virus as well. So virus particles must come in physical contact with the permissive and susceptible cells for infection to occur, necessitating a break in the skin to allow the access of the virus to the live cell. So there need to be some some lesion there in the foot, or something which have occurred, it is the breakage of skin, or in some other injury. So through that injury the virus can enter and will access the living cell within the foot pads. So after that, once the virus has gained entry, local reproduction in the epidermis or and dermis of the foot pad takes place. So once it enters, so the local reproduction, once it enters the living cell, the virus will multiply itself. So that will be the local reproduction, means that there in the local cells it will the first job to do is to multiply itself. So the virus will multiply itself at the very first instance. Within a day after exposure, the virus moves to draining lymph nodes, enters the bloodstream, and can be found in spleen and liver by 3 days after infection. So after that, it will move to the lymph nodes. From the lymph nodes, it will enter the bloodstream, and from the bloodstream, it will enter spleen and liver by 3 days after infection. This is how it reaches to the whole system of the animal actually. Who will explain? Come on, who will explain? सर मैं बता दूं? बताएं प्लीज रिमशा. सर इसमें वही जो पहले हम डायग्राम में देख चुके हैं, एक्ट्रोमीलिया वायरस के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से वो माउस को इन्फेक्ट करता है. तो पहले तो उसमें ये बताया हुआ है कि जो एक्ट्रोमीलिया वायरस है वो माउस इटसेल्फ जो है वो अपने फीसिस में रिलीज करता है इस वायरस को. और जो वायरस है फिर देन क्या होता है कि वो वहाँ फीसिस से क्या करता है कि माउस के जो फुटपैड होते हैं वहाँ पे एंटर हो जाता है, वहाँ से वो माउस के अंदर एंटर होता है. जो पहला हर्डल इसको फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जो माउस का जो फुटपैड होता है उसमें डेड स्किन होती है, ठीक है. तो डेड स्किन सेल्स के अंदर जो माउस है वो जो वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसको तो एक एक्टिव होस्ट मशीनरी चाहिए होती है रेप्लिकेट करने के लिए. तो अगर तो माउस के यानी जो फुटपैड है वो डेड स्किन है तो फिर तो वायरस जो है वो वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा. लेकिन अगर माउस के अंदर कोई भी उसकी जो स्किन है वहाँ पे कोई भी कट है, कोई भी ब्रूस है जहाँ से जो है वो वायरस स्किन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, तो वहाँ से वायरस का हो जाएगा एंटर हो जाएगा माउस के अंदर. एंड देन उसका क्या आ जाएगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट में वो आ जाएगा माउस की, ठीक है. एंड देन वहाँ पे क्या करेगा कि वो डर्मिस और एपिडर्मिस स्किन की जो टॉप में फ्लेयर्स होती हैं वहाँ पे वो उसका कांटेक्ट आ जाएगा. देन वहाँ पे उसकी माउस पे जो है क्या वो सेल्स होंगे वो लाइव होंगे, एक्टिविटी परफॉर्म अपनी कर रहे होंगे. तो वहाँ से जो होगा वायरस क्या करेगा, लोकल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा. एंड देन जो है क्या करेगा, वायरस जो रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसको हमने पहले पढ़ा है कि प्राइमरी नीमिया हो जाता है, तो वायरस जो है वो क्या करता है कि लिम्फ नोड्स की मदद से हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना शुरू हो जाता है. एंड देन ये जो स्टेप है हमारे पास विद इन आफ्टर 3 डेज होना शुरू हो जाता है. एंड देन फिर वहाँ से सेकेंडरी वर्नीमिया होता है, जैसे हमारे पास ये स्प्लीन और जो लीवर है वहाँ से दोबारा फिर हमारे जो है वो स्किन सेल्स में वो होना रिलीज हो जाता है. एंड देन वहाँ पे जो है हमारे पास स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और वो अल्सर वगैरह इस तरह की सिम्टम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं. ओके गुड. सर जी जी सर ये एक था यहाँ पर इम्यूनिटी के हवाले से क्वेश्चन था कि बी सेल और टी सेल को कब एक्टिव करेगा और एमएससी क्लास 1 कब एक्टिव होगी इसके अंदर, जब ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा, जब सेल के अंदर इन्फेक्शन चली जाएगी. ये आगे आ रही हैं चीजें, आगे यही चीजें हैं, ठीक है. ये साथ साथ होंगी सारी चीजें. ओके सर. क्योंकि सर यहाँ लिम्फ नोड की बात है, जब लिम्फ नोड होगा तो फिर वहां पर क्या टी सेल जो होगा वो तो एक्टिव होगा ही होगा.
बिल्कुल, ये असल में वन साइड ऑफ द पिक्चर है ना, ठीक है। सो Yes, ये sir. वायरस के पर्सपेक्टिव से है कि वायरस क्या करेगा, ठीक है। Hmm. So after that, thereafter, the virus continues to spread throughout the host, causing massive inflammation and severe skin lesions by 10 to 11 days of exposure. So inflammation शुरू हो जाएगी, and that means कि host system जो है वो अब respond करना शुरू कर गया है, ठीक है। And skin lesions and by 10 to 11 days of exposure शुरू हो जाएंगे. If the mouse lacks CD8 plus, ये CD8 plus T cells हैं, ये CTLs हैं, cytotoxic T cells हैं. So अगर माउस में CD8 plus T cells नहीं है, CD8 cells नहीं है, it will die of extensive liver destruction by 4 to 5 days after infection. So अगर CD8 cells नहीं है, so the cell will die due to the extensive liver destruction by 4 to 5 days. And if instead, like अगर इसका opposite case ले लें, the host lacks the critical cytokine interferons gamma. तो interferon gamma अगर नहीं है, the virus may be controlled in the liver. The virus can be controlled in the liver, even though death will occur by 10 to 12 days after infection as a consequence of controlled viral reproduction in the skin. So uncontrolled viral reproduction in skin की वजह से the animal can die even though the virus has been controlled in the liver. So this is how it is a bit complicated. So on one hand, the virus has been controlled, but on the other hand, the virus has like done its work. So due to its severe GG. सर ये जो दो केस हैं, दोनों केस में एक्चुअली CD8T के सेल में और इंटरफेरोन गामा के सेल में एक्चुअली फंक्शन तो दोनों का सेम होगा, वो डायरेक्ट होगा रिस्पांस, और इंटरफेरोन गामा जो है वो बी सेल से होके सॉरी टी सेल से होके फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिव करेगा. एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली ये पहले वाले केस में CD8 सेल्स नहीं है, दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में CD8 सेल्स हैं. बट सर दूसरे वाले में CD4 है ना, वो एक्टिव कर रहे हैं CD8. एग्जैक्टली, लेकिन ये स्पेसिफिक साइटोकाइन की बात कर रहे हैं, सारे साइटोकाइंस की बात नहीं कर रहा है कि एक स्पेसिफिक क्रूशियल कोई साइटोकाइन की बात, क्रिटिकल साइटोकाइन की बात कर रहे हैं, सारे की बात नहीं, सब की बात नहीं कर रहा, ठीक है. सो ये असल में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से लिए गए हैं पोर्शंस. ठीक है. सो इवन इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट माइस, अगर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड माइस नहीं है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट है, viral movement from tissue to tissue means that the immune response is continuously playing catch up as infection is controlled in the liver, infection of the skin appear. So अब ये है कि लाइक अगर इम्यूनोकॉम्पिटेंट माइस है, सो वायरल मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होगा, इट विल मूव फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू एंड मींस दैट द रिस्पांस इज कंटिन्यूअसली प्लेइंग. सो रिस्पांस जो है इसका आता रहेगा. सो एक जगह पे कंट्रोल हो गया है लिवर में, लेकिन स्किन में अब इन्फेक्शन है, ठीक है. सो दैट मींस लाइक दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स. एक जगह पे कंट्रोल हुआ है, दूसरी जगह पे कंट्रोल नहीं हुआ अभी, ठीक है. So moreover, while mice of certain strain can contain the infection, immunocompetent mice of a different strain cannot, like underscoring the critical involvement of more subtle genetic regulators of immune control. So that will mean that if the infection is controlled in one strain of immunocompetent mice, the other strain, a different strain of immunocompetent mice could not like suppress the virus. So that will mean there are more genetic regulators involved in the immune control. Like one mice can control the infection, another mice cannot control. So that means there are certain genetic factors, other genetic factors involved in the immune response as well. समझ आ गई है? यस सर. सर ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर. ओके, सर उर्दू में एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज. यस सर प्लीज सर उर्दू में. इससे पहले वाले स्लाइड कौन एक्सप्लेन करेगा? लाइक हु विल एक्सप्लेन दिस वन? इसके बाद फिर आगे सर मैं करूं? जी प्लीज. सर इसमें ये बताया है कि जो वायरस है ना वो स्प्रेड करता रहेगा होस्ट के अंदर,
और स्किन के ऊपर जो है ना वो अपीयर हो जाएगा और इल्यूजन वो बन जाएंगे विद इन 10 to 11 डेज के अंदर। उसके अलावा सर इसमें 2 केसेस बताए हुए हैं कि अगर एक माउस है उसके अंदर CD8+ T लिम्फोसाइट्स नहीं है तो उसकी लिवर के अंदर ना एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन होगी और वो विद इन 4 to 5 डेज मर जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा केस है कि अगर उसके अंदर क्रिटिकल साइटोकाइन इंटरफेरॉन गामा प्रेजेंट है तो वो लिवर के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन फिर भी 10 to 12 डेज के अंदर वो मर जाएगा। और सर नीचे बताया हुआ है कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो माइस होते हैं उनके अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है ना वो टिश्यू टू टिश्यू मूव करता है और उनका रिस्पॉन्स भी शो कर रहा होता है, मतलब उनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो कर रही होती है। वो एक जगह इन्फेक्शन कंट्रोल करता है लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर लिवर में इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है तो मतलब थोड़े टाइम बाद वो स्किन पे इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। सो ओके, सो नेक्स्ट इसका क्या था कि नेक्स्ट इज सर आपकी आवाज फिर बहुत ज्यादा कम हो गई है। यस सर। ओके, सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर एक माइस जो है लाइक हम 2 डिफरेंट माइस स्ट्रेन लेते हैं, डिफरेंट माइस के टाइप लेते हैं, जीनोटाइप लेते हैं, और दोनों डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं और दोनों इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, मीन्स के उनके इम्यून सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर इनको इस वायरस से इन्फेक्ट कर दें तो एक जो है लाइक वो इस वायरस को सप्रेस कर देगा, मीन्स के वो वायरस को कंट्रोल कर देगा, दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि there are more genetic regulators involved in the immune control, like दूसरे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो तो वो वायरस को कंट्रोल करेगा, दूसरे जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके कंट्रोल करने में। ठीक है, समझ आ गई है? यस सर, बट सर ये भी तो चांसेस हो सकते हैं कि वो दोनों ही क्या सर्वाइव कर जाएं, हाँ इम्यूनो हाँ कॉम्पिटेंट रहे। एग्जैक्टली, ये तो उस केस में किया है कि लाइक एक जीनोटाइप कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, उसको कंपेयर किया गया ना। हो सकता है ये बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे जीनोटाइप जो हैं वो कंट्रोल कर सकें लाइक सर वायरस यानी को। कि जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो इन्फेक्ट करता है प्रोटीन, वो अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट माइस के एक क्या कहते हैं कि वो उसकी जो मशीनरी है होस्ट मशीनरी उसको एक साइड से इन्फेक्ट ना कर रहे हो, लाइक वो अदर के लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो दूसरी साइड से इन्फेक्ट कर रहे हाँ हाँ, वायरस की बात हो रही है ना। हैं। यस सर। जी जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। सो अब ये जो है दीज आर एक्चुअली द बैरियर्स, टाइम विद टाइम एक्सपोजर, जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा तो वो बैरियर्स जो हैं वो लाइक क्लियर होते जाते हैं। लाइक अगर फर्स्ट बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर है, एंड दैट कुड बी म्यूकस, दैट कुड बी सलावा, क्योंकि एंड दैट कुड बी स्टमक एसिड, दैट कुड बी टीयर्स, दैट कुड बी स्किन, दैट कुड बी स्कैब्स, दैट कुड बी डिफेंसेस। यहाँ पे अजान हो जाएगी। ओके, सो ये जो है ये स्किन सर आपकी स्किन आवाज नहीं आ रही। जी सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो स्किन इज फिजिकल बैरियर, skin is a physical barrier, and okay, so skin is a physical barrier, tears, scabs, defenses. So scab is actually a protective tissue that covers the skin after the skin has been damaged. तो स्किन जब डैमेज हो जाए उसके बाद जो दूसरा लेयर बनता है उसको हम स्कैब्स कहते होते हैं, ठीक है। सो they are they are actually the physical barriers for to virus और सर infection. डिफेंसेस सर डिफेंसिव यस। डिफेंसेस जो है ये डिफेंसेस जो है these are defense molecules, और इसके एग्जांपल्स अगर मैं देखूं डिफेंसेस के, मेरे जहन में इस तरह सर व्हाइट ब्लड सेल्स।
ये नहीं वाइट ब्लड सेल नहीं, ये सिस्टीन लाइक हार्मोन्स ये वगैरह जो नहीं होते फिजिकल बैरियर है ना, वो तो हाँ केमिकल बैरियर। सर, हार्मोन्स वगैरह नहीं होंगे? ये हार्मोन्स हो सकते हैं, कैटायनिक प्रोटीन्स हो सकती हैं, और लाइक इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो लाइक डिफरेंट पेप्टाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, जो डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, तो ये फिजिकल बैरियर होते हैं, उसको पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। सो दैट कुड आल्सो बी, दिस कुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ द स्किन एक्चुअली, ठीक है। सो डिफेंसेस हो गए, म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, स्टमक एसिड है, टीयर्स हैं, सो दे ऑल पोज फिजिकल बैरियर्स। सेकंड जो है वो इमीडिएट क्या होगा, दैट वुड बी इंट्रिंसिक बैरियर्स होंगे, इंट्रिंसिक बैरियर्स होंगे या इंट्रिंसिक इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। और उसमें क्या होगा, इंटरफिरोन्स होंगे, ऑटोफेगी, apoptosis, microRNA, CRISPR. So all these will be intrinsic responses. ये intrinsic responses होंगे towards the pathogen. सर और क्रिस्पर कैसे होगा यहाँ पे? CRISPR यहाँ पे कैसे होगा? यस सर। क्रिस्पर का असल में ये जो बैक्टीरिया को, अगर जो वायरस इन्फेक्ट कर रहे हैं ना होस्ट को, जी सर। तो वहां पे होता है, लेकिन क्रिस्पर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। यहाँ पे जो है वो इंट्रिंसिक में डाला गया है क्रिस्पर को, एंड क्रिस्पर इज ये डायरेक्ट, असल में आगे जाके हम डिफरेंस पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड द इनेट इम्यून सिस्टम। मतलब सर अगर जो जी वायरस है, जब फिजिकल बैरियर से पास होकर जब आता है इसके ऊपर, तो जब वो इसको होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो उससे कैस प्रोटीन और जो हमारे पास क्या कहते हैं क्रिस्पर आरएनए, हाँ वो हाँ, मतलब डेवलप होते हैं, डेवलप होके फिर वो एज ए बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये ऐसे बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। आप लोगों ने क्रिस्पर पढ़ा हुआ है? यस सर, पढ़ा है मोलेकुलर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो क्रिस्पर जो है वो एज ए बैरियर काम कर रहा होता है, और बल्कि हाँ पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था ना, ठीक हो गया। यस सर, डिटेल से पढ़ा। हाँ हाँ, ठीक हो गया। सो क्रिस्पर विल वर्क एज ए बैरियर। सो दी असल में ये इम्यून सिस्टम भी बैरियर्स हैं, जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, इनेट इम्यून सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे क्लासिफाई किए गए हैं कि इसको हम इंट्रिंसिक में डालेंगे, ऑटोफेगी, एपोप्टोसिस, माइक्रो आरएनए, क्रिस्पर, इनको हम इंट्रिंसिक रिस्पॉन्सेज में डाल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आएगा टाइम इनेट इम्यून सिस्टम का। इनेट इम्यून सिस्टम का ये इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होंगे, इमीडिएटली ये रिस्पॉन्स होंगे। अब मिनट्स एंड आवर्स आफ्टर एक्सपोजर जब होगा तो नेचुरल किलर सेल्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ये सारे जो हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। And after that, the time for adaptive immune system, T cell response, B cell response, ये जो है ये फिर adaptive immune system का part होगा. So we now have four physical barriers. Four barriers. The first one is the physical barrier, intrinsic, innate, and adaptive. These are the four barriers for the virus, and the virus has to overcome all these four barriers in order to make a successful infection. Okay, and this physical barrier will be continuous, means the first line में ये physical barrier इसको आएंगे वायरस को। सेकेंडली फिर इमीडिएट रिस्पॉन्सेज में क्या आएंगे, नेट इंट्रिंसिक रिस्पॉन्सेज आएंगे, और उसके बाद इन मिनट्स एंड आवर्स आफ्टर एक्सपोजर, सो दैट विल बी इन नेट रिस्पॉन्सेज, एंड आफ्टर दैट व्हेन आफ्टर आवर्स एंड डेज adaptive immune system will be activated. So that means the immune system is highly specialized and it has to work accordingly in its time scale. Like it will not like ये adaptive immune system एकदम से काम करना शुरू नहीं करेगा, इसने अपने टाइम पे काम करना है, ठीक है। उससे पहले जो इम्यून सिस्टम है उन्होंने काम करना है। सो अगर एक वायरस आ गया और उसने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया, फिर उसने इस बैरियर को क्रॉस करना है, फिर उसने इस बैरियर को क्रॉस करना है, और फिर इसने इस बैरियर को क्रॉस करना है, ठीक है। सो the immune system has to respond accordingly
in a time schedule manner सर actually. जी सर ये एपीसीज जो है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स भी आते हैं। ये एपीसी है ना। यस सर। तो हाँ सर ये हाँ अडेप्टिव इम्यूनिटी में नहीं आएंगे? नहीं ये इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इस तरह ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम देखते होते हैं कि ये जो है ये इम्यून सिस्टम को लाइक बूस्ट करता होता है। यस सर, जी सर। ठीक है, सो वो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन इसमें डाला गया है लाइक फॉर क्लैरिटी। ठीक है, आगे यस जाके सर। चीजें और भी क्लियर इम्यून सर सिस्टम के बारे क्योंकि में और भी। जी 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 सर, क्योंकि वायरस ये के जी 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 सर मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि डेंड्रेटिक सेल्स और जो हमारे पास होते हैं दूसरे बी सेल्स भी होते हैं ना इसके अंदर, हम्म। मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक सेल और बी सेल। तो बी सेल और डेंड्रेटिक सेल्स वो तो अडेप्टिव इम्यूनिटी का भी पार्ट है। हाँ तो वो फिर ये उसका भी पार्ट है ना, वो असल में इनके मैच्योरेशन में भी इनका रोल होता है ना, ये तो इस तरह नहीं है कि ये अलग काम कर रहे हो। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइक फॉर क्लैरिटी इनिशियल में इसी तरह है कि इसको थोड़ा सा ये असल में ओवरलैपिंग भी है, बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह ये है ना। क्रिस्पर, माइक्रो आरएनए, ये जो ये भी एडेप्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यस सर। फॉर नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू क्लासिफाई देम इनिशियली। हम इस तरह करते हैं, फिर आगे जाके ये एक्सप्लेन होती जाती हैं, फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। ठीक है, so in healthy individual, anatomical and chemical barriers are in place to prevent and repel infections by microbes. When viruses successfully bypass these defenses, now intrinsic responses are engaged. So अगर ये overcome हो जाते हैं, now the host has to engage the intrinsic system responses. And these responses encompass those that already exist in the infected cell and host, and to respond without the need for new transcription and translation. यहाँ पे एक बात याद रखें कि what could be the difference between intrinsic and innate. यहाँ पे new transcription और translation नहीं होती, जो already ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुई होती हैं, जो प्रोटीन मौजूद हैं, जो आरएनए मौजूद हैं, उन्हीं ने ही काम करना है। यहाँ पे भी बॉडी ने कोई नया वो नहीं करना, प्रोटीन नहीं बनाने, वो जो ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम है वही होगा। उसको अगर क्रॉस करेगा तो भी ये दूसरी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद होंगी। ठीक है, सो विद इन आवर्स following exposure, cellular components of the innate immune system, neutrophils and natural killings and the killer cells, so they will start into action, and these cells elaborate chemokines, cytokines, and that of interferon stimulated genes that induce an antiviral state. Within days of infection, antigen specific T and B cells, now these one, the T and B cells will be activated and undergo massive proliferation and migration to the sites of infection. So they will proliferate and they will migrate to the site. अगर liver में infection है, so they will rush towards that. अगर skin में infection है, so they will rush toward to that tissue. So where the most cases a resolution of the infection occurs. And CRISPR is okay, so that's it. CRISPR is clustered regularly interspace short palindromic repeats, and the microRNAs. These are again, all of them are again different topics for discussion actually. And what is intrinsic responses? They are those that pre-exist in the host, our target cell, and function without the need of new protein synthesis in the response of a pathogen detection. So pathogen detection के लिए intrinsic responses में इन्होंने कोई new protein नहीं बनाने हैं। ठीक है, so यही difference है between innate and intrinsic में। ठीक है, and next is all surfaces of mammalian body where pathogens may enter are protected by defensive layer provided by fur, skin, mucus, are protected by acidic environment. So mammalian surfaces जो हैं वो क्या होंगे, या fur, skin, mucus और ये सारी चीजें जो हैं इससे protect होंगी, and that will be the physical barrier.
And next to physical barrier, once these barriers are crossed, cells become infected. Intrinsic cellular defenses, including cell autonomous responses such as interferon production and autophagy editing, as last resort cell suicide or apoptosis. So अगर कुछ केसेस में यहाँ पे क्या होगा कि अगर सेल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो सेल जो है वो एपोप्टोसिस में सेल डेथ हो जाएगी. सेल डेथ इज आल्सो अ बैरियर फॉर द वायरस टू ओवरकम. ठीक है. सो ये सारे जो हैं ये जो सो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझ लें कि इंट्रिंसिक रिस्पॉन्सेज में इम्यून सिस्टम ने, होस्ट ने कोई न्यू प्रोटीन नहीं बनाने, कोई न्यू सिंथेसिस नहीं करवानी. दे हैव टू डिपेंड ऑन द प्रीवियसली ऑलरेडी नोन थिंग्स एंड दे विल प्रोवाइड दोज एज बैरियर्स फॉर द वायरस इन्फेक्शन. And next is, because the virus may reproduce faster than an infected cell can control it, the professional immune response is also induced beginning with the early immune response. So ये वायरस जो है बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा होता है, लेकिन बॉडी ने क्या करना होता है, बॉडी ने अपने सीक्वेंस में रिस्पॉन्ड करना होता है, क्योंकि कुछ वायरसेस यहाँ पे रुक जाएंगे, कुछ वायरसेस यहाँ पे रुक जाएंगे. तो उसके लिए ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम लाना, like this is not wise thing or wise decision. So इस वजह से वायरस जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा होता है. So उस वजह से ये जो like so beginning with the early innate immune system. So innate immune system के बाद जो है वो बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, like उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा. जी जी मोइस. सर अडेप्टिव इम्यूनिटी क्यों लाना, मतलब वाइस ये नहीं होगा कि लाइक वो तो नहीं, असल में उसमें मसला ये आता है कि ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को आगे पहले लाना वाइज डिसीजन इस वजह से नहीं है, इट कॉस्ट मच टू द सेल. अच्छा पहले की बात कर रहे हैं, मैंने कहा शायद वाइस ऐसे नहीं, इट विल कॉस्ट द सेल मच, it will cost too much to the cell. ठीक है, तो सेलुलर मशीनरी सारी इस पे लग जाएगी. An infection. So to initiate an infection there are 3 requirements. The first one is a sufficient number of infectious particles must be there. So it is a misconception that one virus can initiate infection. So the first requirement is sufficient number of infectious particles must be there to have a successful infection. And the cells at the site of infection must be physically accessible to the virus. Susceptible means both bears receptors for entry, permissive and contain intracellular gene product needed for viral reproduction. So it could be susceptible, the cell host could be susceptible and permissive. So it means susceptible means it could have receptors for the virus, and it also have the products and also have the sufficient machinery to multiply the virus. So first requirement was there must be a sufficient number of infectious particles, so that some of the infectious particles would hinder, they would not pass the barriers. Some will cross the barriers, some will be suppressed by the immune system, and others will bypass the immune system. And in that way, so that means there must be sufficient number of infectious particles to have a successful infection. And second one is the host must be susceptible and permissive. And the third point is local antiviral defense mechanisms must be absent, or at least initially quiescent, means they should be suppressed initially, or they should oversee the infection actually. So these are the 3 requirements to initiate an infection. Am I clear with this? Yes, sir. And what is in the chat? Okay. And next to it is
Free virus particles face both a harsh environment and rapid dilution that can reduce their concentration. So viruses that are spread in contaminated water, sewage must remain stable in the presence of osmotic stress, pH changes, proteases, sunlight. So those viruses that are transmitted directly without any help. So like they spread through contaminated water or sewage, so they must remain, so they have the ability to persist the osmotic shock, pH changes, proteases, and sunlight and other factors, other environmental factors. They should sustain those factors. So free virus particles, so they face harsh environments, and they have the properties to sustain those environments. Aerosol dispersed virus particles must remain hydrated, highly concentrated to infect the next host. So aerosol dispersed virus particles, they need to be hydrated. So otherwise they will not be infectious. And viruses, and they must be highly concentrated. They must be in much concentration. And viruses that are spread by biting insects, contact with mucosal surfaces, or other means of direct contact, including contaminated needles, have virtually no environmental exposure. So these sort of viruses, they don't have environmental exposure, so they don't need to face harsh environments. So the viruses that are transmitted through vectors, insect vectors, contact with mucosal surfaces are with direct contact. So they are with contaminated needles. So they are not exposed to the environment. And populations of viruses often contain particles that are not capable of completing an infectious cycle. So this thing we need to know. Gigi. सर वो जो लास्ट स्लाइड पे एरोसोल वायरस, एरोसोल वो क्या होता है? ये एरोसोल डिस्पर्स्ड वायरस। हाँ, मींस के जो एयर से ट्रांसमिट हो, मींस के सांस से एक इंडिविजुअल से दूसरे को ट्रांसमिट हो, लाइक कोरोना वायरस। जी, लाइक तो सर फिर ये हाइड्रेटेड होने चाहिए। जी, ये हाइड्रेटेड होने चाहिए। मींस के इसके साथ मॉइस्चर का होना जरूरी है। ओके सर, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर ना हो तो दे आर नॉट, ये इन्फेक्शन नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर इन्फेक्शस नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द वायरस, मतलब सर इनको नेक्स्ट होस्ट में जाने के लिए, मतलब अगर ये एरोसोल होते हैं तो इनको हाइड्रेटेड फॉर्म में होना पड़ता है, फिर ये नेक्स्ट होस्ट में जाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और उसके लिए इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने हाईली कंसंट्रेटेड होना होता है, मींस के कॉपी नंबर इनका बहुत ज्यादा हो, विरियन बहुत ज्यादा हो एक इंडिविजुअल में। ठीक है सर, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सो ये एक पॉइंट है, इसको समझ लें कि दिस इज इंपॉर्टेंट। Populations of viruses often contain particles that are not capable of completing an infectious cycle. So that means defective particles can be produced by incorporation of errors during virus genome replication, or by interaction with inhibitory compounds in the environment. So it happens like, if I could draw, like we have many viruses, many copies of the virus, and there will be many copies which are like they are defective. They will not multiply. So these copies, all these copies will they will make virions, and these virions, when the virions are there, so there will be virions that are, there will be viruses that are infectious, but there will be other viruses that they will not be infectious. So if these non-infectious viruses, they encapsulate these defective genomes, they will not be infectious. So if they transmit to some individual,
they will not cause infection. So they will be defective particles, and these defective particles, how they will be formed? They will be formed due to the work of polymerase. The polymerase will incorporate some errors during the replication, or maybe due to the inhibitory compounds in the environment, they make some defects in these strands, and when they encapsulate in the genomes, so they will not cause infection. So it is not necessary that every particle is infectious. So in a population of virus, there will be many defective particles. And next to it is there are the concept of quasi-species. So quasi-species, virus population are not made up of single member with a defined nucleic acid sequence. Rather, they are dynamic distribution of non-identical but related members called quasi-species. So in a virus population, if we have a virus population, we will be having many copies, but but in actual, they will be having different copies. They will be a population with different copies, and they will be like different population, and and all these will be known as quasi-species. Means all they will not be same, because at every replication of the DNA, or every replication of the genome, so it may make some mutations within the genome. So that means every genome will be a bit different from the next one. Every single genome will be a bit different from the next one. So, and this is the concept of quasi-species. So these are the virus populations that are not made up of single member with defined nucleic acid sequence. Rather, they are dynamic distribution of non-identical, means they will not be identical, they will be having different mutations. So, but related members, they will be related, even though they will be related, but they are not identical. So these are known as quasi-species. And यहाँ तक clear है? Am I clear? सर Yes, sir. जी जी सर ये डिफेक्टिव पार्टिकल्स का दोबारा बता दें कि वायरॉन्स जो डिफेक्टिव हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन काज नहीं करते हैं? यस, जस्ट इसके एग्जांपल में एक बता दूं कि फॉर इंस्टेंस वी हैव अ वायरस and it replicates and it makes many copies. Some of the copies, like it will not have the polymerase gene, so this gene is defective. So now in the population, how it replicates, when this strand make polymerase, that polymerase will replicate this, because although it doesn't have its own replicates, but the other replicates will replicate it. Even some of them will, the core protein will not be expressing. So the other core protein, when they produce the core protein, those core protein, this came from the other strand, and it can encapsulate the defective as well. So it will encapsulate the defective. So the other strands, there are other quasi-species, actually they will be complementing their own members, and this phenomena is known as complementation. If I write it here, this phenomena is known as complementation. Means one of the strands will complement the other that is defective for some specific property. So now when this encapsulates this defective strand, and this is that, now this will not be able to infect some other individual unless it is accompanied with by other strands or other virions. ठीक है, समझ आ रही है? So all these Yes, will be sir. known as Sir? quasi-species. जी जिस तरह से हमने पहला रेट्रोवायरस के केस में पढ़ा था कि वो एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर जो डिफेक्टिव पार्ट होता है, निक्स और गैप्स होते हैं, उसको होस्ट की मशीनरी जो रिपेयर करती है. बट इस केस में क्या होगा कि जो एक्चुअली हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बनेगी, उनमें से जो डिफेक्टिव होंगी उनको जो हेल्दी होगा, यानी कि उसमें से जो
वो उसका डीएनए उसका पॉलीमरेज या फिर उसकी कोर प्रोटीन वो उसको क्या कहते हैं कि वो रेप्लिकेट भी करवाएगी और उसके गैप्स और ब्रेक्स को क्लियर भी करेगी। एग्जैक्टली इसको कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि एक की कोई डेफिशिएंसी है वो दूसरा उसको फुलफिल कर रहा है। कंप्लीमेंटेशन तो लुक अलाइक नहीं होता? नहीं, टू कॉम्प्लीमेंट सम डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और क्वेजी स्पीशीज का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस जो है वो दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये सारी पॉपुलेशन जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगी। ठीक है, मीन्स के वायरसेस की पूरी पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल के अंदर, अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो एक ह्यूमन को कोई HCV ने इन्फेक्ट किया हुआ है तो उसमें जो पूरी पॉपुलेशन HCV की है वो तो सारे स्ट्रेन सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो दे विल बी प्रेजेंट इन द क्वेजी स्पीशीज। और सर उसकी रीजन क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं है इसकी रीजन? होते SNP हैं, बिल्कुल होते हैं, यही रीजंस हैं इसके। उसकी वजह से वर्स हो जाता है और म्यूटेड हो हाँ, जाता है। बिल्कुल म्यूटेशंस होती हैं और इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि हमारे पास एक वायरस है ATCTG, ये एक स्ट्रैंड होगा, एक जीनोम होगा एक ही पॉपुलेशन के अंदर। दूसरा जो है उसी इंडिविजुअल होस्ट के अंदर ये इस तरह होगा, बाकी सारा सेम होगा GTC, and next will be ATCAGTC। इस तरह के बहुत सारे कॉपीज होंगे, मीन्स कि ये सारे आइडेंटिकल तो नहीं है ना आप। ठीक है, लेकिन ये जो है ये मौजूद होंगे, हो सकता है ये डिफेक्टिव भी ना हो। ठीक है, सारे जो है वो ठीक हो। इसका फायदा ये होता है जब पॉलीमरेज इसको रेप्लिकेट करता है तो इसमें म्यूटेशंस ऐड करता है। और इसका फायदा ये होता है कि फॉर इंस्टेंस होस्ट ने इसको सप्रेस कर दिया है, सो बाकी मौजूद हैं इसको, क्योंकि दिस इज अ बिट चेंज फ्रॉम दिस वन। सो एक को होस्ट ने सप्रेस कर दिया, सो दिस विल इवॉल्व एज अ पैथोजेनिक वायरस। ठीक है, ये दूसरा सप्रेस हो गया। सो पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं, बहुत डिफरेंट वायरस मौजूद होते हैं। इस वजह से वायरसेस जो हैं वो इवॉल्व बहुत जल्दी कर जाते हैं। होस्ट अगर सप्रेस कर भी दें तो न्यू वायरसेस इवॉल्व होते जाते हैं। तो सर इसका नुकसान ही हुआ, फायदा तो नहीं ना हुआ? अगर जिस तरह कोरोना वायरस की बात करें, अब उसकी थर्ड वेव चल रही है, तो उसकी हाँ, रीजन भी तो यही है ना कि वो अपने आप को उसने म्यूटेट कर लिया और चेंज कर लिया। एग्जैक्टली नहीं, मैं एक उस तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा। मैं असल में, हम तो एवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं ना, तो ये वायरस खुद को तो, हम वायरस को तो वायरस के फायदा है। कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हाँ हैं। हाँ, एग्जैक्टली हम वायरस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि ये नेचर ने क्यों इस तरह इसको रखा हुआ है, इसके अपने फायदे के लिए है ये, वरना ये खत्म हो जाता। यानी वायरस को पढ़ने के लिए वायरस की तरह सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसके पर्सपेक्टिव में, वायरस क्यों इस तरह करता होता है, क्यों खुद को चेंज करता है, तो ये उसको बेनिफिट देता है, इस वजह से ये म्यूटेशंस काज करता होता है। इवन ये उसके लिए नुकसानदेह भी होता है, बहुत सारे जो हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, लेकिन इसका फायदा ये है कि वो बहुत न्यू वेरिएंट्स आते होते हैं इसमें। ठीक है, यस सर। सो शुड वी गो फर्दर क्लास? जी सर। Okay, and if we can see this, infection seen as a series of stochastic events. And these events are, like in the first case, this is one tissue and high pathogen diversity is there, and it transmits to the another tissue, it transferred to the other tissue, so the other tissue will have some specific restraints on the multiplication of that virus. Wait for a while. So it transfer to the other tissue, and there will be some restraint in that tissue, and that will only produce specific, it will only multiply, or it will only leave only certain types of virus strains. The other could not be multiplied.
there. And this type 3 tissue means this is the same individual but different tissue will multiply specific types of viruses, virus strains actually. Now if you can see here, this is like you can see this is one type of the virus is there. The diversity is less here. Here in oesophagus or in the respiratory tract, the diversity of the viruses is more because it permits different sort of viruses, different types of viruses. Here in intestine, a specific type means the diversity, if we compare with this one, diversity is less. So, and here there is more diversity here, there is specific types of virus multiply here. So this is the tissue tropism. Specific type of viruses could be multiplied and other would be restricted from multiplication. So selection of viruses that can pass through bottlenecks in cells, organs or host. In this case, the virus population enter a host, diverse quasi-species with sufficient titer. So that also means these restrictions give rise to different viruses, different types of viruses. And after entry, the population may encounter host barriers that limits the diversity, and pool members with the ability to overcome this barrier may then reproduce. The tissue may have high diversity but differ in the overall consensus sequence from the initial infecting population. So that means this barrier could be crossed by only two types of, here it is represented only two types of the viruses. They cross this barrier and infect the other cell. Now this tissue barriers only be crossed by only one type of this cells, one type of this pathogen, and the other could multiply here, but the barrier could cross only one type, and here the other type could like cross that barrier. So this is how the host system pose barrier to the replication of the virus. So and here the virus population may enter a highly restricted environment, so the host has certain restriction on the virus, where host and viral factors limit productive reproduction. So the resulting population may have decreased diversity. So the diversity could be decreased, even though initially they were more. So if that is a respiratory virus, so the diversity was more, and then the diversity is decreased. A productive infection in a host should allow efficient reproduction in one or more tissue, facilitating spread of a virus population at a higher titer and higher diversity to optimize infection. So, इसकी समझ आ गई है? सर एक बार थोड़ा सा इसका ना ओवरव्यू दे। कौन एक्सप्लेन कर देगा कोई? सर मुझे जहाँ तक यही समझ आई कि लाइक बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह से ये डाइवर्स होता जाता है, और जो आगे जिस तरह जाता है उस तरह अपने आप को म्यूटेट करता जाता है। लाइक इस पर्सपेक्टिव से कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, उसके अलावा जी, who will explain? Maida is there. Maida? यस सर, मैं इधर ही हूँ। जिस तरह आपने बताया है कि मुझे भी इसकी इतनी समझ आई है कि जिस तरह से एक वायरस है और वो मतलब बॉडी में डिफरेंट जगह पे जाके अपने आप को डिफरेंट तरह से जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन फिर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक सर्टेन वायरस है, वो तो एक ही ऑर्गन को जाके जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो फिर पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। हाँ, ये असल में पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता होता है वायरस, लेकिन जो होस्ट की बॉडी है वो डिफरेंट टिश्यू जो है वो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन लगाता होता है। कुछ टिश्यूज को वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता, कुछ में वो स्पेसिफिक टाइप, क्योंकि ये जब इनिशियली डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब इन्फेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। कुछ जो टाइप ऑफ वेरिएंट्स हैं वो किसी स्पेसिफिक टिश्यू में रेप्लिकेट करेंगे, कुछ किसी और टिश्यू में रेप्लिकेट करेंगे, कुछ किसी और में रेप्लिकेट करेंगे। सारे इस तरह नहीं होंगे कि वो सारे हर जगह पे रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब ये देखें, यहाँ पे सारी डाइवर्सिटी फिर इंक्रीज हुई है दोबारा,
ठीक है। सो ये जो है, सो इसका मतलब ये है कि ये असल में ये एक जनरलाइज पिक्चर ली हुई है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि कुछ टिश्यूज जो है वो परमिट करेंगे वायरस के रेप्लिकेशन को, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ जो है वो स्पेसिफिक टाइप के सिर्फ उसको करेंगे ताकि वो लाइक द, सो दैट मींस द होस्ट सिस्टम पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द वायरस रेप्लिकेशन। सर जी जी सर फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी वायरस डायग्नोस हुआ है, जी तो जी। डॉक्टर तो सिर्फ जो है वो हेपेटाइटिस सी का इलाज करेंगे, जो इसकी डिफरेंट वेरिएंट्स जाके बॉडी में डिफरेंट जगह के ऊपर नहीं नहीं, डिस्टर्बेंस वो कॉज कर रहे हैं। उस केस में वो वायरस जो है वो और टिश्यूज को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके रिसेप्टर्स वहां पे नहीं है दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पे। तो ये क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि सिर्फ पूरी बॉडी को जाके इन्फेक्ट हाँ करती हैं? एग्जैक्टली ये तो जनरलाइज एक पिक्चर ली हुई है ना। जिस तरह ये कोरोना है, कोरोना बहुत सारे सिस्टम को लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी करता है, अपर को भी करता होता है, मुख्तलिफ टिश्यूज को कर रहा है कोरोना। इस तरह डिफरेंट वायरसेस और भी बहुत सारे हैं जो पूरी बॉडी को कर रहे होते हैं, ठीक है सर। ठीक है। ये एक जनरलाइज पिक्चर है। So next to it is, so different routes of viral entry into the host. So these are the locations and these are the viruses. So these are the routes for the virus entry, like skin के through which viruses can enter through arthropod bite, like these are the vectors for the virus, and like Bania viruses, flaviviruses, flavivirus, it's dengue virus, pox virus, Rio virus, Toga virus. So all these viruses, they are transmitted through arthropod bites. And needle puncture, sexual contact. So these are hepatitis C, hepatitis D, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, hepatitis B virus, human immunodeficiency virus, papilloma virus. So these viruses are like they are through contact, right? Like needle puncture. Okay, so some are through animal bite, like rabies virus. So this is through animal bite. So these are the transmission route is starting route is skin. So the location is skin. Through it will transmit through the skin, and through the skin how, like using arthropod bite or needle puncture or animal bite. And the second one is respiratory tract. So the location is respiratory tract, and localized upper tract is rhinovirus, Coxsackie-virus, coronavirus, and hantavirus, and there are so many influenza virus A, B, human adenovirus types जो हैं वो हैं। localized lower tract में भी respiratory syncytial virus है, para influenza virus है, human adenovirus type 1 to C. So these are the, in fact, also the upper and the lower tract as well, and SARS. And entry via respiratory tract followed by systemic spread, means they will enter into the through the respiratory tract, but this will spread throughout the body. And these types of viruses that spread throughout the body are rubella virus, and they will start from the respiratory tract. Rubella virus, arena virus, hantavirus, mumps virus, measles, varicella zoster virus, pox virus. So pox virus, these viruses, they infect the whole body. And certain viruses, they infect alimentary tract, like systemic and localized. The systemic one will be enterovirus, reovirus, adenovirus, and localized will be corona rotavirus, and urogenital tract को जो इन्फेक्ट करते हैं. सो सिस्टेमिक कौन से होंगे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टाइप 1, HIV1, हेपेटाइटिस बी वायरस.
So this is systemic, means this will spread throughout the body. Hepatitis B virus will spread throughout the body. C will not spread throughout the body. So and herpes simplex virus, so this will be systemic. And localized will be papilloma virus is localized. And eyes is the location, so that is systemic. कौन से होंगे? Enterovirus, herpes simplex virus, localized adenovirus types 8, 22, and so on. So these are the viruses that they have different routes of viral entry. And next is dermal damage increases immunity and host survival. So when there is dermal damage, means skin का damage जो है, that increases immunity, उससे immune system increase होगा और host survival will be increased. So once there is injury, dermal injury, cytokines will be produced by will be released by these damaged cells, and they will induce the immune system, and the immune system will rush towards the injury site. Like here, the cytokines are released, the chemokines, etc. They are released, and the immune system, now these are the immune cells. The immune system, they rush towards that area, and they first disinfect that area, and then they seal this area. And this increase the damage, dermal damage increase immunity and host survival. How this damage increase host survival and immunity? So until recent, so this if you can see the diagram, the figure in the lower panel, lower right, and this is actually polio vaccination. This is, sorry, smallpox vaccination. And if you can see, needle is held perpendicular to the arm, wrist of the vaccinator is there, drop of vaccine is held in the fork of the needle. So this is a specific type of the needle for vaccination that was previously used, and the drop of the vaccine is being held in the fork of the needle, and they then pierce the skin. And scarification, this is known as scarification process. And until recently, it was not appreciated that scarification process itself was an important component of vaccine efficiency. So scarification जो है means कि skin को scars लगाना, उसको like scratch करना. So until now it was not appreciated, but now it is known that it is important component of the vaccine efficiency. And how it is important? Experiment using smallpox related virus, vaccinia virus, showed that intradermal inoculation, like if we don't use this, and if we inoculate intradermally of the virus into rabbits, result in lethal disease by 8 days after infection. So if we use the inoculum of smallpox related virus, the vaccinia virus, it will kill the rabbit. Whereas delivery of the same virus by scarification led to a protective host response. So if we use this technology by scarification, if we inoculate the human, the rabbit, for that, it will be protective. So in this case, in this way, we can vaccinate like the host. And scarification in the absence of virus followed immediately by the same site intradermal challenge with virus result in significant protection to infected rabbits. So if we do scarification without using any inoculum, without any virus using of any virus, so what will happen? Again, if we use if we inoculate the same site, that will be resulting in significant protection in those rabbits. And the act of scarification, scars or scarification damages skin cells and the underlying epidermis. So it will damage the skin cells. The scarification will damage the skin cells and the underlying
epidermis, inducing release of cytokines and chemokines that help to direct the host responses to the site of infection. So you can see it induces the host responses to the site of infection. So the host immune system cells, they rush towards that area and restrict the dissemination of the virus through the host, throughout the host. So it restricts the virus from spreading from that area. Am I clear? Class? Yes, sir. Yes, sir. Who will explain? Marwa? Marwa is there, Marwa? जी आप एक्सप्लेन कर दो इसको। वालेकुम सलाम। जी मरवा। सर मेरा गला थोड़ा खराब है, सॉरी मेरे से आपका गला खराब है, ठीक है, नो वरीज नो वरीज। ओके, हु विल एक्सप्लेन? गुलाम रब्बानी। यस जी सर, इसमें जो है ना वो डर्मल डैमेज के जरिए बताया हुआ कि स्कैटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए से हम कैसे वैक्सीनेट कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को, होस्ट की इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है उसमें एक्सपेरिमेंट में बताया कि स्मॉल पॉक्स रिलेटेड वायरस वैक्सीनिया वायरस जो था, तो उसको जब इंट्राडर्मल इनोकुलेशन दिया गया तो जो रैबिट था उसकी 8 दिन में जो है वो डेथ हो गई आफ्टर इन्फेक्शन। और इसके रिस्पांस में अगर इसको जो है वो स्टेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए करें तो ये आफ्टर इनोकुलेशन उसमें उन्होंने नीडल यूज किया था और जी ठीक है जी बताएं प्लीज। यस सर, और स्कैरिफिकेशन प्रोसेस में हुआ है, वो स्कैरिफिकेशन के जरिए से जो है इसका जो है वो होस्ट का जो है वो प्रोटेक्शन होती है, इसकी मतलब डेथ नहीं होती। तो इस तरीके से ये जो है बेनिफिशियल है, ऑल्दो इसके ऊपर जो है आजकल जो है इसको इतना वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसकी पहले अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, अब इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। पहले इसको नहीं किया जाता था, पहले ये सब लोग समझते थे। हाँ जी जी ठीक है, तो अब इसका जो है और जी प्लीज सर फिर आगे बताया हुआ स्कैरिफिकेशन इज इन द एब्सेंस ऑफ वायरस followed immediately by same site intradermal challenge with virus resulted in significant protection to the infected droplets. सर इसमें ये बताया कि स्कैरिफिकेशन की जो एब्सेंस में है, अगर वही जो है सेम साइट पे जो है इंट्राडर्मल, सर ये थोड़ा सा ये लास्ट वाला आप एक्सप्लेन करना। ओके, सो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम स्कैरिफिकेशन कर लें विदाउट इनोकुलेशन, अगर वायरस यूज ना कर लें, सिर्फ स्कैरिफिकेशन कर लें और फिर उसके बाद क्या कर लें, उसके बाद वायरस जो है इनोकुलेट कर लें, तो भी उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ होता है, वहाँ पे इम्यून सेल्स आ गए होते हैं, उनने वायरस को आगे जाने नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि द होस्ट रिस्पॉन्स ऑफ एंड रिस्ट्रिक्ट डिसेमिनेशन। ठीक है, सो स्कैरिफिकेशन जो है ये क्या करेगा कि ये इंड्यूस करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद अगर हम जब इनोकुलेशन यूज कर लें, वायरस यूज कर लें, सो बेटर वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी विल बी दैट। जी सर, ये जो आपने थर्ड पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही हो सकता है कि ऐसा पहले किया होगा चेक करने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस में तो नहीं आ सकता। पहले स्कैरिफिकेशन करे, बाद में उसकी इनोकुलेशन नहीं, ये एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और स्कैरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस का बताया हुआ है कि स्कैरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस। जी। आफ्टर दैट in the praise of mucus, so mucus is too much important and praiseworthy actually. Mucus producing cells line the mouth, nose, sinuses, throat, lungs, and the entire gastrointestinal tract.
So mucus, these are actually these producing cells line up these organs actually, and in addition to its lubricant function, so एक काम तो इसका lubricant function है, lubricant का. Mucus acts as a protective blanket over these surfaces, preventing the tissues underneath from dehydrating. अगर हम mouth का internal part देख लें, so हमें mucous membrane नजर आ रहा है पहले. So mucous membrane actually they produce mucus, and that is actually a blanket over the surface to protect the surface actually. Eyes के अंदर अगर हम देख लें, eyes का जो inner part है, eyes का, mouth का, so they are and similar is with the whole organs, other organs as well. Throat हो गए, lungs हो गए, gastrointestinal tract हो गए, GIT हो गया, तो ये सारे जो हैं, they're the mucus producing cells line up these tissues. And mucus also acts as sort of pathogen flypaper, trapping viruses and bacteria. So these the mucus also they trap actually viruses and bacteria, and they're pathogen flypaper. And more than being just a sticky goo, mucus contains antibodies. So the mucus also contains antibodies, enzymes that kill invaders it traps. So mucus actually that is a sticky material. Once the pathogen is trapped there will be antibodies and enzymes that will kill the invaders, and a variety of immune cells poised to respond to pathogens that attack to it. So this mucus is this is one of the wonders. When an individual acquires a respiratory tract infection, neutrophils, so neutrophil has a much important role. Neutrophils, a key element in the host innate immune response, rush to the infected site. So the sooner a respiratory tract infection occurs, neutrophil rush there and to the infected site. And these cells contain an enzymes, myeloperoxidase, and which is critical for the ability of the neutrophils to eliminate the pathogens. So neutrophils requires this enzyme as well. So as individual with genetic loss of myeloperoxidase, if an individual do not encode this myeloperoxidase, or if an individual lack this enzyme, so that individual is immunocompromised, especially for respiratory tract infections. So this is how it contains, it has sticky properties. Why the sticky properties are important? It contains antibodies, enzymes, and other immune cells, which are important to suppress immune response, to suppress pathogens. And myeloperoxidase is stored in GT. सर 1 बजे क्लास होती है तो 2 मिनट, ये लास्ट स्लाइड है. ठीक है. Myeloperoxidase is stored in azurophilic granules prior to release. These granules are naturally green or tan. So if you can see why the mucus is green or tan, if we can see, so thus when neutrophil, so this myeloperoxidase is stored in these granules, and when they release, these granules are actually green or tan in color. Thus, when neutrophils are present in large number, the mucus appears green. So if it also means when there is an infection, the mucus will appear green in color because of the release of this myeloperoxidase. And one may indeed assume that discolored mucus is a sign of infection, as a recruitment of neutrophils often accompanies infection. So when neutrophils is a large in number, so one may indeed assume that this the discolored mucus is a sign of infection actually. And like if the color is changed, that means the infection is there. Like green in color, so that will mean infection is there in the mucus, and that's it.
And there are many other function of this mucus membrane. So this has sticky properties as well, and that's it. And the rest we have talked about it. Thank you so much.